Hello guys, welcome back to the another video. In this video, we will discuss about what is the collection framework in Java and what is the need of collection framework to introduce in Java. So let's we start from the what is the need of collection framework. What is the need of collection? Okay. So what is the need of collection framework? So when we started learning Java, then if we want to store the variables, we can we can store the variables in this way, like a int a is equals to 10. Okay, then int b is equals to 20, b is equals to 20, then int c is equals to 30. इस तरह से हम वेरिएबल को स्टोर करते थे जावा में। पर अगर हमको इस टाइप में अगर हमको 2 3 4 अगर समझो 10 तक वेरिएबल स्टोर करने हैं तो हम स्टोर कर सकते हैं। ओके, वी कैन एबल टू स्टोर द वेरिएबल्स, बट if I want to store variables in a large numbers, means if I want to store 100 variables or 500 or 1000 variables, so by this method it is not possible. Okay, so we can't write the code, means like int a is equals to b c d like that, so it is not possible. Okay, to solve this issue, we introduce or we learn the array concept in Java. Okay, by using this array concept, we can able to store number of elements, the number of elements number of elements in an array. Okay, by writing the single line of code, means let's suppose if I want to store the 500 variables in array, so I directly write one single line of code, the int array of a is equals to new int new int, and here I initialize the value. Okay, here I initialize the value, how much elements I want. Let's suppose I want the 500 variables, then I write here the 500s, so that I can able to store the 500 elements in this array by using this single line of code. I don't need to write again and again. Okay, but some advantages of this array. Okay, for this some advantages we need to introduce the collection. So firstly we see what is the disadvantages. Okay, what is some disadvantages of this array. Disadvantages of array. So we start. The first disadvantages of the array is that in Java the size of an array is fixed. We cannot change the size of an array on later on or on on runtime. ओके, जो एरे की जो साइज है वो फिक्स है, वो हम रन टाइम पे कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। जब हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे हैं कि जो एरे की साइज है वो 500 होगी, तो वो 500 ही होंगी, वो फिक्स होंगी, वो ग्रोएबल नहीं है, वो 500 ही रहेंगी। ओके, इसका जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है वो हम देखते हैं यहाँ पे। लेट्स सी द एग्जांपल। हियर आई सर्च Amazon on this smart, I search smartphones. ओके, यहाँ पे अभी मैंने स्मार्टफोन सर्च किया है अमेजोन वेबसाइट पे। तो जब मैंने पहले बार जब मैंने सर्च किया है स्मार्टफोन, तब वो शायद
शायद मुझे अगर समझो लेट सपोज वो मुझे 50,000 मोबाइल शो कर रहा है, दिखा रहा है। अगर यहाँ पे अगर वो मुझे 50,000 मोबाइल वो पहले अटेम्प्ट में शो कर रहा है, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट जब मैं रिफ्रेश करता हूँ तब मुझे वो 50,000 ही मोबाइल दिखाएगा। शायद इसमें से मोबाइल कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर जो भी कोई सेलर है यहाँ पे अमेजोन पे, अगर उन्होंने उनकी जो सेलिंग है वो बंद कर दी, ओके, या कोई मोबाइल आउट ऑफ स्टॉक हो गए, तो इसमें से कोई मोबाइल कम भी हो सकते हैं। अगर समझो कोई मोबाइल न्यूली लॉन्च हुए उसी टाइम पे, या तो उस टाइम पे उसमें से मोबाइल बढ़ भी सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम एरे कंसेप्ट का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एरे की जो साइज है वो फिक्स है, वो कम या ज्यादा नहीं हो रही। तो इसी के लिए हमें कलेक्शन पढ़ना पड़ रहा है या कलेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है। ओके, सो इसकी जो साइज है वो फिक्स है। देन नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस इसी, देन टू वर्क with array, we have to write algo algorithm manually to overcome overcome above problem. Okay, so अगर हमें एरे में कोई भी अगर कोई भी हमको ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, तो हर बार हमको उसको एल्गोरिदम लिखना पड़ता था। अगर अगर हमको एरे में कोई भी वैल्यू ऐड करनी है, कोई भी वैल्यू निकालनी है, अगर हमको रिवर्स करना है, ओके, सो उस टाइम पे हमको पूरा एल्गोरिदम लिखना पड़ता था कि हमको कोई भी चेंजेस अगर एरे में करना है तो। बट इन कलेक्शन वी डोंट नीड टू राइट द एल्गोरिदम एवरी टाइम। ओके, there are so many methods available in array, sorry, in collection to solve this issue. Okay, so we don't need to write the algorithm every time. Okay, so, so this is the second disadvantages of the array. Okay. Now we moving to towards what is collection. Okay, now talking about what is collection. Okay, so what what is collection? So in Java, collection is a framework which can be used to store group of ऑब्जेक्ट्स। ओके, जावा में कलेक्शन एक फ्रेमवर्क है जो कि ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। तो अब नाउ द क्वेश्चन इज राइट दैट व्हाट इज फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क क्या है। ओके, तो framework is a collection of packages, okay, and the classes is the collection means is api, okay, means class collection of class is api। okay, जो अगर हमको कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करनी है, तो जो छोटे छोटे क्लासेस है, उन्हें मिला के एक पैकेज बनता है, और उस पैकेज को हम एपीआई कहते हैं। द एग्जाम्पल इज दैट जेडीबीसी एपीआई, जो कि जिसमें बहुत सारे क्लासेस और इंटरफेसेस को मिला के एक पैकेज क्रिएट हुआ है, और उसे हम एपीआई कहते हैं, जो कि जेडीबीसी एपीआई। ओके, और उन सभी पैकेजेस को, जो भी पैकेजेस होते हैं जो कि कलेक्शन ऑफ क्लासेस रहते हैं, उन सभी पैकेजेस को मिला के जो होता है उसे हम फ्रेमवर्क कहते हैं। ओके, अगर आसान आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, तो छोटे छोटे गांव जो है, मतलब छोटे छोटे जो घर है, उन्हें मिला के एक गांव बनता है। ओके, और जो छोटे छोटे गांव है,
छोटे छोटे गांव है उनको मिला के एक शहर बनता है। ओके, तो छोटे छोटे जो घर घर है, वो घरों को मिला के जो गांव बनता है उसे हम एपीआई कहते हैं, और छोटे छोटे गांव को मिला के जो शहर बनता है उसे हम फ्रेमवर्क कहते हैं। ओके, इन अ सिंपल वर्ड्स। ओके, देन उसे हम फ्रेमवर्क कहते हैं। ओके, देन बिफोर then before collection, okay, before collection, to store group of objects we can use, you can use the array concept। तो कलेक्शन से पहले हम एरे कंसेप्ट का यूज करते थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करने के लिए। ओके, नाउ वी सी द एडवांटेजेस ऑफ कलेक्शन। Advantages of collection। Okay, so the first advantage is that in Java collection framework, in collection framework is growable, is growable. We don't we don't we don't need to think about the size at all. We don't need to think about don't think about the size, sorry, size at all. In Java, collection framework is growable. We don't need to think about the size at all. Okay, जो size है तो collection की वो बढ़ती जाती है। आपको size के बारे में कोई कोई भी मतलब सोचने की जरूरत नहीं है। Here जो हमने एग्जाम्पल दिया था, देखा था यहाँ पे अमेजोन का, अगर इसमें 50,000 या उससे भी ज्यादा मोबाइल्स आते हैं, कितने कितने मोबाइल्स आते हैं, तो ये साइज जो है ग्रोएबल होती है। ओके, तो हमको साइज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप मेमोरी में साइज उसकी बढ़ती रहती है। ओके, देन सेकंड एडवांटेज इज दैट कलेक्शन फ्रेमवर्क कलेक्शन फ्रेम कलेक्शन फ्रेमवर्क provides provides possible data structure and algorithm, possible data structure and algorithm. Hence we to don't need to write program uh, manually, don't need to write algorithm। जैसे कि मैंने आपको एरे के डिसएडवांटेजेस में बोला था कि एरे में हमको कोई भी अगर टास्क परफॉर्म करना है तो हमको पूरा एल्गोरिदम वहाँ पे लिखना पड़ता है। यहाँ पे आपको कोई भी एल्गोरिदम लिखने की जरूरत नहीं, बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल है क्लासेस में। ओके, रेडीमेड क्लासेस अवेलेबल है, रेडीमेड जो एल्गोरिदम है वो अवेलेबल है, जिसके बाय यूजिंग दिस मेथड यू कैन एबल टू परफॉर्म द वेरियस operations। Okay, hence hence collection becomes easy to represent
group of objects. ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, इसी के वजह से इजी जाता है कलेक्शन को हम मतलब ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स शो करने के लिए। ओके, नाउ वी सी द what are the classes and interfaces in collection. Okay, so if we search on here, if we search classes and interfaces in collection framework, okay, here there are there are lots of diagrams available on internet. Okay, so we have I have one diagram to show you. Okay, so this is the diagram of the interfaces and the classes. Okay, the interfaces and classes in the collection framework. So in next video we see one by one the detail of every classes and interfaces. We start from the iterable to up to the means up to the synchronous queue. So we cover the all the interfaces and classes and interfaces in the next video one by one. Okay, so thank you.